Hello everyone, today we will solve a few most important MCQs on PIL, that is Public Interest Litigation. Okay, so those who are preparing for All India Bar examination this year, this video lecture will be very helpful for you all. Okay, without any further delay, let's start today's session. So the first question is our object of Gram Nyalayas. Object of Gram Nyalayas. Okay, so what is Gram Nyalayas? Gram Nyalayas is an act of parliament. Okay, it is an act of parliament. Okay, that established village courts. मोटो क्या है इस ग्राम न्यायालय की? टू एस्टेब्लिश ए विलेज कोर्ट. ओके, विलेज कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था. ओके, सो ग्राम न्यायालय इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट एस्टेब्लिश्ड विलेज कोर्ट्स to provide what? To provide easy and quick access to justice in rural areas. Okay, especially in rural areas. Okay, रूरल एरियाज. सो देखिए ऑप्शंस आर, देखिए क्या है ऑप्शंस आर to provide for the establishment of gram न्यायालय at the grassroots level, for providing access to justice to the citizen, to ensure opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic and other disabilities, and all of the above. So the correct option would be option D, that means all of the above. Okay, that means ये जो ग्राम न्यायालय का एस्टेब्लिश हुआ था उसका ऑब्जेक्ट था टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन एंड स्पेशली टू दोज हु आर डिनाइड टू एनी फैसिलिटीज सच एज ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज. केस क्या होगा? इन दिस के ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए next question is about which article of International Covenant on Civil and Political Right provides for right to legal counsel is an integral part of guaranteed in civil right. So options are देखिए Article 14 Clause 3, Article 15 Clause 2, Article 16 Clause 3 and Article 20 Clause 2. So in this case, the correct option would be option A. That means option A would be the correct answer. That means Article 14 Clause 3. Now moving to next question. देखिए which article of the Indian Constitution is related to equal justice and free legal aid? So this is very important question. Options are देखिए Article 39, Article 39A, Article 43 and Article 43A. So in this case, option B. Option would be option B. That means Article 39A. Okay, so in this case, option B would be the correct answer. So now move to next question. देखिए next question is about the first committee on legal aid and legal service. The first committee on legal aid and legal advice was appointed in India in 1949 under the chairmanship of whom? Options are देखिए Justice Krishna Iyer, Justice Natwarlal Bhagwati, Justice P.N. Bhagwati and Justice Y.V. Chandrachud. Okay, so in this case, option would be Justice P.N. Bhagwati. Okay, Justice P.N. Bhagwati. So the first committee जो लीगल एड एंड लीगल एडवाइस में बिठाया गया था, तो उसमें कौन चेयरमैन था? जस्टिस P.N. Bhagwati was the chairman. Justice P.N. Bhagwati was the chairman. Okay, so in this case, option C would be the correct answer. So now move to next question. Next question देखिए. Next question is the National Conference on Legal Aid and Advice 1970 was held in which place? Options are देखिए Mumbai, Chennai, Delhi, Kolkata. So in this case, option C would be the correct answer. That means option C would be the correct answer. That is Delhi. Okay. So now move to next question. Which act ensures free and competent legal aid service to the weaker section of the society? So the options are देखिए the Legal Service Authority Act 1987, Preventive of Atrocities Act 1989, the Protection of Civil Rights Act 1955, and none of the above. Okay, so in this case, the correct option would be option A. That means the Legal Service Authority Act 1987.
ओके जो जहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, जहाँ पर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड एंड एडवाइस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है टू होम, टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So in this case option A would be the correct answer. So now move to next question. Next question is our, which section of CRPC deals with the right of accused to be defended by the pleader of his choice? Okay, so the options are देखिए, section 306 of CRPC, section 303 of CRPC, section 303 304 of CRPC and section 308 of CRPC. So in this case the correct option would be option B, that means section 303 of CRPC. Okay, CRPC. So in this case option B would be the correct answer. Question क्या है, that means under section 303 of the CRPC the accused has a right, okay, the accused has a right to be defended by the pleader of his choice. That means under as per the provision of section 303 एक accused के पास right है उसको डिफेंड करने के लिए एक प्लीडर जो प्लीडर वो खुद के चॉइस का है, ठीक है, जो जाके कोर्ट में जाके उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसको डिफेंड कर सके. सो this is the provision of section 303. So now move to next question. Next question is our, which law commission report recommended that right of indigent accused to be represented in the state cost, okay, at the state cost must be statutorily recognized? Options are देखिए, 14th report, 14th report, 41st report, 124th report and 290th report. So in this case the correct option would be option B, that means 41st report. So in this case option B would be the correct answer. So now move to next question. The central authority under the Legal Service Authority Act 1987 is known as what? Options are देखिए, National Legal Service Authority, Central Legal Service Authority, Nationwide Legal Service Authority, and none of the above. So in this case the correct option would be National Legal Service Authority, which is also known as NALSA. Okay, which is also known as NALSA. That means the central authority जो है, जो which is under the Legal Service Authority Act 1987 का है, उसके अंदर जो central authority उसका नाम क्या है, उसका नाम है NALSA, that is National Legal Service Authority. So in this case the correct option would be option A. Okay, so now move to next question. देखिए, tenure of NALSA. Tenure of NALSA कितना है, देखिए ऑप्शंस आर 3 years और till the age of 65 years, 5 years और till the age of 62 years, 5 years or till the age of 65 years, and 3 years or till the age of 60 years. So in this case the correct option would be option B, that means 5 years and till the age of 60 years. अगर that means अगर 5 years हो गए, that means देखिए, अगर 5 years complete हो गया, then that member will be retired from his service, or at the time of attaining 62 years from the date of joining, from the date of what, joining, ठीक है, from the date of joining. So in this case क्या होगा, option B would be the correct answer. So now move to next question. Which of the following section deals with the organization of Lok Adalat under the Legal Service Authority Act 1987? So options are देखिए, section 19 of the Legal Service Authority Act 1987, section 32 of the Legal Service Authority Act 1987, section 31 of the Legal Service Authority Act 1987, and section 35 of the Legal Service Authority Act 1987. So in this case the correct option would be option A, that means as per the provision of section 19 of the Legal Service Authority Act 1987, it deals with the organization of Lok Adalat. Okay, Lok Adalat का establishment होता है as per the provision of section 19 of the national of the Legal Service Authority Act 1987. So in this case option A would be the correct answer. So now moving to next question. देखिए, next question देखिए, which article of Indian Constitution contains for provision for settlement of dispute through Lok Adalat? Options are देखिए, article 14, article 21,
Article 39A and Article 19. So in this case, the correct option would be option C. That means Article 39A. Okay, Article 39A, that which is all about free legal aid. Free legal aid. That means जहाँ पर फ्री लीगल एड के बारे में बोला गया है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द एक्यूज्ड और एनी पार्टी हु इज इन नीड ऑफ, जहाँ पर फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है टू होम हु नीड्स फ्री लीगल सर्विस. ओके, दिस इज द आर्टिकल. सो दिस इज द आर्टिकल 39A, जहाँ पर जहाँ पर प्रोविजन दिया गया है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू लोक अदालत के बारे में बोला गया है. ठीक है, लोक अदालत के बारे में बोला गया है. सो इन दिस केस क्या होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड एट, ऑप्शंस आर गुजरात, मुंबई, दिल्ली एंड पंजाब. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. दैट मीन्स द फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था और फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पर हुआ था. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए. दैट मीन्स गुजरात. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन देखिए, नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर टू लोक अदालत. लोक अदालत में कौन कौन सा नेचर का केस रेफर किया जा सकता है. ऑप्शन सर, एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, वन बी एंड नन ऑफ द अबव. सो इन दिस केस देखिए, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ ए एंड बी. दैट मीन्स अगर कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है कोई भी कोर्ट में, ठीक है, पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, दैट मीन्स चल रहा है कोई भी कोर्ट में, और एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट, अगर कोई भी एक डिस्प्यूट जो कोर्ट में, एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, दैट मीन्स कोई भी केस जो कोर्ट में फाइल अभी तक नहीं किया गया है एंड इज लाइकली टू बी फाइल दैट, और एंड ये अभी फाइल कर भी वो केस फाइल किया जाएगा, देन एट दैट time or at that situation that case, okay, that case can be referred to the lok adalat. Okay, so in this case the correct option would be option C. So now to next question. Next question is the jurisdiction of the permanent lok adalat is up to, options are देखिए 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs and 30 lakhs. So in this case the correct option would be option A. That means 10 lakhs. Okay, so now we do next question. Next question is the other name of lok adalat is, लोक अदालत का दूसरा नाम क्या है. देखिए, ऑप्शन आर हाई कोर्ट, डिस्प्यूट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, पीपल्स कोर्ट. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. दैट मीन्स पीपल कोर्ट. दैट मीन्स ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स लोक अदालत मीन्स क्या है, लोक अदालत, लोक मीन्स पीपल एंड अदालत मीन्स कोर्ट. दैट मीन्स लोक अदालत का मीनिंग क्या है, पीपल कोर्ट. सो इन दिस केस ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लोक अदालत हैज नो जुडिक्शन टू सेटल, ऑप्शन सर देखिए, कंपाउंडेबल मैटर्स, नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स, फैमिली मैटर्स एंड नन ऑफ द अबव. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. That means lok adalat has no jurisdiction to settle compoundable matters, non-compoundable matters. Which are non-compoundable matters? Non-compoundable matters are those matters which are very serious kind of nature. Okay, जिसके लिए जो जिस केस को हम लोग कंपाउंड नहीं कर सकते. इस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. दैट मीन्स नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. सो दैट मीन्स देखिए, लोक अदालत का कहाँ पर जुडिक्शन नहीं है, जो केस नॉन कंपाउंडेबल है. दैट मीन्स नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स आर दोज मैटर्स विच आर वेरी सीरियस काइंड ऑफ नेचर, which are very serious kind of nature. And what is compoundable matters? Offense or matters is a crime where the parties involved can reach a settlement, okay, and drop the charges against the accused. matters में क्या होता है, drop the charges against the accused, okay, accused while the case is still in the court. This process is called compounding and allows for an amicable resolution without a full trial, or
कंपाउंडेबल मैटर में क्या होता है, विदाउट ए फुल ट्रायल एक डिसीजन लिया जाता है कोर्ट में, जहाँ पर एक्यूज को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स विदाउट ए फुल ट्रायल, विदाउट ए full trial. Okay, that means non-compoundable offense means those offense which are very serious kind of nature. and compoundable matter में क्या होता है, compoundable matter में accused को उसको जो उसके अगेंस्ट जो चार्ज होता है उसको accused को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अगेंस्ट हिज चार्जेस, एंड ऑल दिस थिंग्स आर डन विदाउट अ फुल ट्रायल, without a full trial. Okay, so now moving to next question, and this is the last question. Okay, देखिए, which section of the Legal Service Authority Act 1987 empowers the civil court to refer case to the लोक अदालत? ऑप्शन सर देखिए, section 21, section 1970, section 22. So in this case the correct option would be option C, that means section 20. That means, so in this case the correct option would be option C. So in this case the correct option would be option C. Okay, that means as per the section 20 of the Legal Service Authority Act 1987, it empowers the civil court to refer the case to any lok adalat. Okay, so this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you very much. See you in the next video.